स्वागत है आपका दोबारा इस चैनल में। एंड आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम XD की हेल्प से कुछ बेहतरीन डिज़ाइंस बनाने वाले हैं गाइस। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो मैं अभी XD में हूँ एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कैसे यहाँ पे जो मेरा पेज का नाम है वो मैंने चेंज कर दिया। एंड आई विल बी क्विकली शोइंग यू हाउ यू कैन क्रिएट वन गुड डिज़ाइन ऑन XD। तो मैंने यहाँ पे आर्टबोर्ड लिया है iPhone 14 Pro Max 1 एंड मैं यहाँ पे फटाफट से एक स्क्रीन बनाता हूँ। सो द बेस आई विल टेक एज वाइट। आई विल यूज़ अ टेक्स्ट टूल यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने लिखा है लेट मी एडजस्ट गुड टेक्स्ट ओवर हेयर। सो मैं अभी एक ट्रैवल वेबसाइट बनाने वाला हूँ एंड उस ट्रैवल वेबसाइट के हम 2-3 पेजेस बनाएंगे एंड आई विल बी शोइंग यू हाउ यू कैन मेक गुड पेजेस। तो अभी के लिए बेसिक्स है ये, बहुत इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है। फर्स्ट चेंजिंग द लेआउट। तो मैंने यहाँ पे लेआउट लिया है ना, आई हैव टेकन 4 कॉलम्स, गटर विड्थ इज़ 10 एंड जो column width है I will be changing it to 16. Then I will be taking the text tool over here and I will be drawing a text box यहाँ पे, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ let's say explore new places without any hassle, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ यहाँ पे चेंजेस हो गए हैं। सो आई विल बी टेकिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। सो इट हैज़ चेंज टू दिस वन। फॉन्ट मैं यहाँ पे लूँगा मेरा फेवरेट पॉपिन्स एंड मैं इसको यहाँ पे थोड़ा लेता हूँ। आई थिंक लेट मी टेक इट बोल्ड एंड 20 को मैं चेंज कर दूँगा यहाँ पे 36 पिक्सल्स पे गाइज। लुकिंग समथिंग लाइक दिस। बहुत ही बड़ा हो गया है तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम, मे बी मीडियम। एंड फॉन्ट साइज वी कैन टेक एज maybe 30 and let me make it regular, थोड़ा weight कम लगे। okay, I think this looks cool. Explore the places without this thing. So I have my text ready। यहाँ पे टॉप में मैं यहाँ पे कुछ लोगो दूंगा। तो लोगो के लिए I have the plugin named as icon for design and यहाँ पे let me search some good logo for travel। And the size is almost same, so I will be resizing it to the size and so this is my subtext। so subtext is always smaller, so मैं इसके यहाँ पे 18 कर देता हूँ। and इसका जो color है, let me just also change the color to a bit of darker, something like this। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर ब्लैक नहीं लिया क्योंकि ब्लैक से एक बहुत ही बेकार सा आपको कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। दैट इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। डिस्टेंस आई विल बी कीपिंग एज 18। या आपको देखने के लिए आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड में ऑल्ट या फिर ऑप्शन प्रेस कर सकते हो। सो ऑल्ट इफ़ यू आर यूजिंग विंडोज़ एंड ऑप्शन इफ़ यू आर यूजिंग मैक। एंड आई विल बी एडिंग वन image over here। I will be using this image। I have just copied it from the internet, just resize the same। इसको मैंने यहाँ पे लेके आ गया and I will be masking this image with shape। तो as you can see this has been masked। रिसाइज़ करने के लिए इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा एंड आई विल बी रिसाइजिंग इट टू दिस थिंग। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये इसके ऊपर नीचे से ये आपका प्रॉपर्ली यहाँ पे मास्क अभी हो चुका है। एंड वंस यू आर सेटिस्फाइड विद द पोजीशनिंग समथिंग लाइक दिस, यू आर गुड टू गो। सो नाउ यू कैन सी द थिंग हैज़ ऑल्सो बीन मेड, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लेआउट को थोड़ा सा बंद कर देता हूँ एंड यू कैन सी द स्क्रीन समथिंग लाइक दिस। and उसके बाद the height of the thing will be 56 and I will be creating some good corner radiuses, so maybe 20 I will be taking। looks a bit odd of this one, so half इसको यहाँ पे ले लेते हैं 10। this looks fine, ठीक है। 10 मैंने यहाँ पे ले लिया and I will be giving some background blur this particular one। तो मैं यहाँ पे गया background blur, check on this one and and just change the the colors and all these things।
तो बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे दिखने को ये मिल रहा है। एंड सेंटर अलाइन दिस पर्टिकुलर वन, उसके लिए आप यहाँ पे ऊपर के टॉप के ऑप्शंस चूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ फॉर द सेंटर अलाइनमेंट, दिस इज़ फॉर द लेफ्ट अलाइन, दिस इज़ फॉर द बॉटम अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट, एंड द टॉप अलाइन। सो आप यहाँ से भी इसके हेल्प से यहाँ पे आप चीज़ों को कर सकते हो। आई विल बी यूजिंग वन आइकन ओवर हियर दैट विल बी सेइंग फॉरवर्ड आइकन्स। I will be changing the color to white to make it more contrast, and I will be making the second screen. So for that, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं यहाँ पे, and by pressing shift you can just we have कुल्लू, एंड यहाँ पे उसके बाद हम थोड़ा प्लेसमेंट कर लेते हैं यहाँ पे। This we have taken 16, so this also will be 16. Select all, drag it to the left, select all like this and make it the horizontal scroll with the help of this particular one, scroll groups, and this will be my horizontal scroll. So guys, thank you so much for watching this video, and if you have liked the video, do share and subscribe, and keep coming back in this channel for having some exciting tutorials and things on the UX and UI design. Thank you so much for watching. Have a good day. Cheers.